How to create business goals in year 2023. Hi guys, I'm Kewal Kishan, and in this video, I'm going to share with you 5 steps which will help you to create goals, which will help you track the goals, which will help you to complete the goals as well. So make sure you watch this video till end if you are a business owner and if you want to create business goals for year 2023. By the way guys, I am Kewal Kishan, and past 10 years, I've been helping business owners to achieve their business goals by helping them systemizing their business using Google Forms, Google Sheets and WhatsApp automation. सबसे पहला स्टेप है बिजनेस गोल्स क्रिएशन में कि आपको गोल्स डिफाइन करने हैं। हम गोल्स क्रिएशन की बात करते रहते हैं बट हम कभी वो एक्टिविटी करते ही नहीं। So create goals for each and every department. Like I'll tell you, I have created 50 goals for year 2023. Create few goals for marketing department. सेल्स के लिए कुछ गोल्स बनाइए, अपने टीम के लिए कुछ गोल्स बनाइए. क्रिएट फ्यू गोल्स फॉर एचआर, क्रिएट फ्यू गोल्स फॉर फाइनेंस एज वेल. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल इन ईच वन ऑफ देम. मार्केटिंग में आपका गोल हो सकता है कि आप व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज करें और इस साल अपने सारे क्लाइंट्स को वैल्यू ड्रिवन फेस्टिवल विशेस भेजें, बर्थडे रिमाइंडर्स भेजें, एनिवर्सरी रिमाइंडर्स भेजें, सो दैट आप उनसे रिलेशनशिप बेटर कर पाएं और वो आपको ज्यादा रेफरल्स दे पाएं. सेकंड, यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल, राइट? यू कैन थिंक ऑफ taking testimonials from your clients and adding it on your YouTube channel. एक गोल आपका हो सकता है सेल्स में, सेल्स ग्रो नहीं हो रही है तो वो चैलेंज नहीं है. सेल्स का चैलेंज है कि आपके पास CRM नहीं है. तो एक गोल बना सकते हो कि इस साल मैं अपने सेल्स डिपार्टमेंट में CRM इंप्लीमेंट करूंगा. टीम मैनेजमेंट में बोल सकते हो कि मैं टास्क डेलीगेशन टूल इंप्लीमेंट करूंगा सो दैट अपनी टीम को अच्छे से मैनेज करूं. सो फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट बिजनेस गोल्स फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. Now here, you need to make sure that you are not creating too many goals because less is more. Create less number of goals, but make sure you complete them. Second step is define deadline for each and every goal. Now, when I created 50 goals, 50, I'm not going to complete it in the first month of the year. No, I've distributed those goals based on the priority from January till December. So goals creation important है, but उनकी deadline even more important. Because किसी स्मार्ट पर्सन ने ये बोला है that when there is a deadline, there is a delivery. When there is no deadline, there is a delay. तो सेकंड स्टेप क्या है? डेडलाइन डिफाइन कर दीजिए कि किस मंथ के किस डे पे वो पर्टिकुलर गोल आपको कंप्लीट करना है. बिकॉज अगर आपने गोल्स क्रिएट करे और डेडलाइन नहीं डिफाइन की तो ये वैसा हो जाएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जिम की मेंबरशिप ले ली और फरवरी में फिर से घर पे बैठे. सो गोल्स बनाइए, तो अगर बना रहे हैं तो मेक श्योर यू कंप्लीट इट एंड दैट हैपेंस ओनली व्हेन यू आर डिफाइनिंग द डेडलाइन. थर्ड स्टेप इज जो आप गोल्स बना रहे हैं इट शुड नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड. यस, यू हर्ड इट राइट. योर गोल्स शुड नेवर बी रिजल्ट ओरिएंटेड. इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड. फॉर एग्जाम्पल, यू से केवल आई वांट टू डबल माई सेल्स, सो दैट शुड नॉट बी द गोल. सो योर गोल शुड बी केवल आई वांट टू इंप्लीमेंट CRM, आई वांट टू इंप्लीमेंट व्हाट्सएप मार्केटिंग. बिकॉज वंस यू अचीव दिस गोल, sales is just the outcome. Sales is just going to come naturally. So third step is when you define your goals, analyze them and see whether they are result oriented or whether they are action oriented. Because if they are result oriented and there is no action in that, what action will you take on completing the same? What action your team will take on completing the same? Do you agree on this? By the way, could you tell me what are top 3 goals, business goals which you have created for your business in year 2023? Tell me in the comment box. And I'll reply you back on what should be the systems which you should implement to complete those goals. चलिए अब फोर्थ स्टेप पे चलते हैं. गोल्स तो बना लिए, हर डिपार्टमेंट में 2-2, 4-4 गोल बना लिए, और एक गोल को कंप्लीट करने में 2-4 काम करने होंगे आप, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग इंप्लीमेंट करना है, सो व्हाट यू नीड अ व्हाट्सएप API, you need a WhatsApp marketing Google sheet, you need to create few WhatsApp messages. Then only you'll be able to use WhatsApp marketing and send the messages, right? So for that goal, there are 3 steps or there are 3 tasks. So when you define the goals, add or write what are the tasks which you or your team need to perform by completing which the goal will be completed. So divide your goals into number of tasks. For example, you've got created 12 goals for 12 months, add 3 to 4 tasks in each and every. So what will happen? You will be specifically knowing what action to take, and few actions taken, your goals will be completed. And the last
step is the core step here. That is, goals बना दिए, task बना दिए, पर reality ये है कि 80% task और goal तो आपकी team ही करेगी. Yes or no? Because you are somebody who's going to guide them, but at the end they are going to do it. But अगर आपकी टीम ही आपके टास्क गोल्स टाइम से कंप्लीट ना करे, क्या होगा? पूरा साल निकल जाएगा और आपके गोल्स वहीं के वहीं रह जाएंगे. सो स्टेप 5 इज implement task delegation system. Learn the art of delegation. We have a system where you can define the task and KRAs of your team. You can define the deadlines, and your team will start getting WhatsApp reminders of all the tasks based on days that you have given the deadline for. And as in the dashboard, you will be able to analyze किस टीममेट के कितने टास्क कंप्लीट हो गए हैं, कौन से टास्क लेट हो रहे हैं, कौन से टास्क ऑन टाइम है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ विच इन योर वीकली मीटिंग्स, इन योर मंथली मीटिंग्स, आप स्पेसिफिकली उन टास्क पे फोकस कर पाओगे और अपने टीममेट्स को गाइड कर पाओगे ऑन हाउ दे शुड कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आपने काम तो दे दिया, आप अपने काम में बिजी हो गए, अपने क्लाइंट एक्विजिशन में बिजी हो गए, 1 महीना 2 महीने 4 महीने बीत गए, एंड देन यू आस्क योर टीम कि अच्छा वो काम दिया था, क्या हुआ? They will say, boss, आपने कुछ और काम दिया था, we are busy here. So they will start making excuses. And reality is, you also make excuses because आपका कई बार काम आप खुद डिले कर देते. So step 5 is really important. That is, learn the art of delegation. Task delegation system implement कीजिए so that आप अपने आप को भी reminders भेज पाओ और अपने staff को reminder भेज पाओ और एक analysis आ जाए कि कितने task complete हो गए, कितने task pending है. Now, I'll tell you a couple of more tips before we wrap up this video. But before that, I'm really working hard to add value for you. So make sure you click on the subscribe button, right? And you hit the bell icon as well. And if you want to help your other friends to achieve their business goals, make sure you share this video with them. Right? Let's quickly revise this. First step was defining the goals. Second step was adding the deadline. Third step was analyzing them and make sure they are action oriented. Fourth was creating the tasks, each and every goal. And fifth was delegating the task through task delegation system. Now you're wondering, Kewal, task delegation system कहाँ से मिलेगा? Well, for that I'm conducting a 2 hours of Business Automation Masterclass, where you will discover on how you as a non-technical business owner can achieve your business goals by automating your business using Google Form, Google Sheets and WhatsApp automation. और उसी 2 hours के मास्टर क्लास में You will see what is task delegation tool, ये कैसे काम करता है और कैसे ये सिंगल टूल आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट को सॉर्ट कर सकता है और आपको फ्रीडम दे सकता है फ्रॉम डे टू डे फॉलोअप्स. मैं 4 से 5 घंटे वेस्ट करता था टीम से फॉलोअप. द डे आई इम्प्लीमेंटेड, आई गॉट फ्रीडम फ्रॉम इट. एंड सेम केस विद ओवर 4,000 स्टूडेंट्स हु हैव इम्प्लीमेंटेड दिस टूल. सो मेक श्योर you follow these steps and you create, measure, track and achieve your business goals and grow your business to the next level. I'll see you in another video. Before that, make sure you like, subscribe and tell me in the comment box what are your 3 goals which you want to achieve in this year. Keep learning, keep automating and keep growing your business. Thank you so much.